हेलो, प्रणाम, नमस्कार। पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ, और आप जुड़े हैं इस समय ग्रीन सस्टेनेबल पॉडकास्ट पर, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट मैनेजमेंट की। इमेजिन अ वर्ल्ड where the mounting piles of plastic waste are not just an environmental menace but a valuable resource. This vision is closer to reality than one might think, thanks to some groundbreaking study that has unlocked a new frontier in sustainable waste management. In the lieu, I just read a news that by leveraging a solvent-free, energy-efficient flash upcycling method, researchers have found a way to transform fiber-reinforced plastics, a notoriously difficult to recycle material, into silicon carbide, a material prized for its application in reinforcement and semiconducting. ये तो हुई बड़ी न्यूज की बात। तो ऐसी छोटी कई जगहों पर कोशिशें हो रही हैं जिसमें हम अपने वेस्ट को, एनवायरनमेंट को परेशान करने की जगह एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें, व्हिच इज लाइक वेस्ट टू वंडर। आई एम श्योर कि इट इज अ कंट्रीब्यूशन टू द सर्कुलर इकोनॉमी वेयर वी आर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वैल्यूएबल कमोडिटी। वेस्ट एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया है, उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, वो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज वेस्ट मैनेजमेंट और उससे जुड़ी हुई कई चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है इस पॉडकास्ट पर सुधीर सिंह पुंडीर जी, हु इज पार्ट ऑफ 3R Zero Waste Private Limited, who handles the operations and is CEO. इनके बारे में मैं और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेट्स वेलकम सुधीर जी टू द ग्रीन पॉडकास्ट। नमस्कार सुधीर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आई एम फाइन, थैंक यू। गुड टू हैव यू ऑन द ग्रीन पॉडकास्ट। सुधीर जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सुधीर जी has a 25 years experience in supply chain. He is a Six Sigma black belt and इसी की वजह से वेस्ट को अवॉइड करना, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज को अवॉइड करना, ये इनका पैशन है। So who other than सुधीर जी can guide us about the waste management today? So जब हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक टर्म है जो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग रखती है कि एक चीज होती है वेस्ट और एक होता है मैनेजमेंट। सुधीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी मेरे सस्टेनेबल पॉडकास्ट के लिसनर्स के लिए, व्हाट इन योर व्यू इज वेस्ट मैनेजमेंट? Yeah, I'm really thankful for giving me this opportunity to talk about waste management. And when we talk of management, because I'm a management student, so management means system channelization and output-oriented approach. So in that, I can tell when we talk of waste, we must talk of what should be the system of handling the waste. I mean, how when the waste takes place, then where how to handle it, where to take it, item wise, category wise, and in case we are able to make that system, that channel, if something is wasted and then it is to be put in that particular slot, it is to be shifted to that particular place, and then it should be recycled or it should be made some useful thing out of it, and again it is put to use. That is a sort of a circular economy. If we are able to close that type of loop, I think we are able to win the battle. So right. The management and system has to be in place. That should be the part of a very strong waste management. Absolutely right. So certainly waste management, which refers to various schemes to manage and dispose of waste. Like it can be, जैसे आपने कहा, it can be discarding, destroying, processing, recycling, reusing, controlling waste. There can be number of ways, and I'm sure कि जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हर टाइप का वेस्ट आता है, which is industrial, biological, household, municipal, organic, biomedical, radioactive. There are a lot of waste. So इसका segregation करना, separation करना, एंड इसको एनवायरमेंटल हजार्ड से और पोटेंशियल हेल्थ से बचा के रखना, ये हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वही जैसे हमने बात की कि वेस्ट जनरेशन से लेकर इसके खत्म होने तक की एक जर्नी के लिए। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि हम जब बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसके साथ आजकल एसोसिएट किए जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि वेस्ट को सबसे पहले तो आने ही ना दिया जाए, अगर आ गया है तो उसको हमें रीयूज और रिसाइकिल किया जाए। सो इन योर व्यू, हाउ you as an individual
as well as a industrial person, how do you manage your reduction of waste? See, as far as there are two aspects of it. One is the reduction of waste, and second thing is the handling of waste. So Hmm. I put more focus on how to reduce the waste. Hmm. So in case we are able to reduce the waste, we are able to, attack the root cause, Hmm. and it means we are able uh, uh, to make this world uh, free from the waste to a larger extent, because if we move in such a way that waste doesn't take place, I think we will win the battle. So in that particular thing, one is waste is from our usable things. Hmm. So we'll have to really think about it. Whatever we are using, whether it's required or not, so Hmm. we'll have to plan our purchases. So Right. anything we buy, anything we use, we are not in case we are able to plan it, then I think the usage will be very logical and very in a very optimized way. Hmm. So Hmm. the second thing is we'll have to really think that whatever we are using, what is going to be its disposal after use. We should be very clear, very clear, that in case I'm using a pen, I should know Hmm. that this pen is going to be after my usage. What is going to be the future of this pen? Whether Right. it's going to be reused by somebody, or if I'm going to throw it, where should I throw it? Hmm. I mean, it's a metal or if it's a plastic, I should put it in a metal category or I should Hmm. put it in a plastic category. And then accordingly, I should be able to put it in the right slot. Right. Right. So you take you and second, third thing is we must use our things in a very with a lot of belongingness. If I'm using my car, it is giving me a lot of services. I must reciprocate my services to the car. I must handle it very nicely. I must increase its life. Hmm. So that way, if I'm optimizing its life, I am again trying to reduce its. I mean, I'm trying to increase its age, and once Right. I increase the age, the probability of putting into a scrap will be less. I mean, or I will just defer it to a larger extent. Absolutely. Absolutely right. बिल्कुल ठीक These कहा are the आपने few कि things which I can pronounce. हम्म These are the few things which I can pronounce at the moment, that lot of belongingness is required with the usables, हम्म and lot of planning is required when we buy things and when we use things. That is one part of it. Second thing is uh, we must see that a lot of packing is being put into the waste. So if we buy things maybe for our grocery, for our daily use things, once in a week or 15 days in a week, whatever is the economical lot size we can plan, that way we can reduce the packings, हम्म small packings, and we can definitely uh, attack it in a very positive way, and we can reduce the waste. So that is a very absolutely small exercise you can do. राइट राइट ऑफ कोर्स सुदीप जी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपका प्लानिंग इसमें सबसे पहले आती है कि वो चीज हमें चाहिए नहीं चाहिए है बाइंग करने से पहले बजटिंग करना एंड देन रैशनल बाइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये नहीं है कि हम मार्केट चले गए एंड जस्ट कैजुअली जस्ट चीज अच्छी लगी इसलिए खरीद के ले आए उस चीज के साथ आपने जो वर्ड यूज किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिलोंगिंगनेस आपकी उसके साथ रिलेटेबिलिटी आपका रिलेशनशिप आपकी यूजेबिलिटी कितनी है ये देखकर ही हमें किसी चीज को खरीदना चाहिए ये नहीं कि बस बहुत अच्छी दिख रही है या बस मार्केट में नहीं आई है इसलिए खरीद लिया वेल सेड एंड आई लव द वर्ड बिलोंगिंगनेस टू अ प्रोडक्ट जस्ट आपकी इन बातों से एक कोट याद आता है मदर टेरेसा का कि आई ओनली फील एंग्री व्हेन आई सी वेस्ट
when I see people throwing away things we could use. So, she also used to speak a lot about wastage, and as someone who committed most of her life to helping the poor, she saw firsthand what it means to lack the needed resources. And sadly, abhi bhi, there's still not enough education on how we can reuse, recycle or put a better use to our daily waste into something useful. So ये जो आपने चीज बोली है कि शुरुआत होती है हमारी पहली चीज से, सोचने से, एक कॉन्शियस बायर बनने से, उस कॉन्शियस डिसीजन को लेने से कि क्या वो चीज मुझे चाहिए। तो हम जब ये वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैं लिस्टर्स को बताना चाहूंगी, हमारे 5 R इसमें जरूर आते हैं जो अक्सर बात किए जाते हैं, जिसका फर्स्ट R इज रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। एंड रिफ्यूज इज दैट फर्स्ट स्टेप, जैसा कि अभी सुधीर जी ने बोला कि खरीदने से पहले सोचिए सच में चाहिए या नहीं। नहीं चाहिए मत खरीदिए। आपको कोई ऑफर कर रहा है, वो चीज आपको नहीं चाहिए, आपकी उसके साथ बिलोंगिंगनेस नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज से नो, रिफ्यूज टू बाय इट। रिफ्यूज द थिंग्स दैट कैन बी हार्मफुल टू योर एनवायरमेंट। रिफ्यूज things which have chemicals in it. Refuse the things like आपने कहा पैकिंग मटेरियल है, अननेसेसरी की चीजें हैं। तो इस सब को रिफ्यूज करना, आई एम श्योर, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे पहला स्टेप होगा हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का। देन सडनली कम्स रिड्यूस। रिड्यूस करना कि एनर्जी की यूसेज कम करना है, लिमिट करना रिक्वायरमेंट्स को, रिसोर्सेज को। सो या वेल सेड, जब आपने वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ये बात कही। सुधीर जी, जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो आपने मुझे एक चीज बताई थी कि सिंस यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री, यू हैव सीन लास्ट 25 इयर्स में आपने कई सेटअप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, प्लांट्स, फैक्ट्रीज देखी। मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी कि हाउ हैव यू सीन वेस्ट मैनेजमेंट एट अ हायर और अ इंडस्ट्रियल लेवल, प्लीज। See, at an industrial level, nowadays we are fortunate that industry is passing through a phase where lot of they are really, I mean, preference is on the compliances, that some systems are there and industry is adhering to those systems and showing the compliances. And there are so many types of audits are taking place in the industry where this compliance to the environmental saving, how to save the environment, those type of compliances are being demanded from the industry. So that is what I have seen in the past. In case electronic waste is generated or plastic waste is being generated, in the past it used to be a very simple thing, that it used to be given to the anybody, I mean, whosoever is trying to buy that. But now with the passage of time, there's a lot of awareness has been given to the industry. A lot of systems demand is there from the industry that any hazardous waste, e-waste, plastic waste has to be given to the recyclers only, and who are authorized by pollution control boards. So that is a very positive step government has taken, and even industry itself is well aware of that they need to be eco-friendly, and in turn they are giving to the recyclers even if they are getting less money, but getting into that I mean, environmental saving technology, techniques, approach. That is a fantastic thing which I have seen, and I see 5 years down the line, 10 years down the line, I don't think any ordinary kabadi wala or any scrap dealer would be able to take any of the hazardous waste like electronic waste or plastics or oils, chemicals from the industry or from the commercial houses without having any authorization. So that way we are ensuring that whatever the waste we are generating, it is going to the safe hands, and it's recycled by the authorized people, and it is not going to the landfill and affecting the environment adversely. So this is going to be more in practice in the coming years, and we see a very systematic waste management approach and environmental saving approach, and generations are going to be better as compared to the past lives.
Wow, it's so good to hear this when you say this, कि we are going to see a better, a greener planet if we keep on doing these management activities at every level. सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, and really I wish कि this should happen, because as the human population and overconsumption grow, the waste we produce becomes harder to get rid of. With adequate waste management, I'm sure we tend to think that waste does not affect us. कभी कभी ये होता है ना कि हमने घर से बाहर कचरा निकाला, इट इज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, हम भूल जाते हैं कि आगे उसकी जर्नी क्या है, लेकिन उस कचरे की जर्नी, उस वेस्ट की जर्नी तो वहीं से उसी काली थैली में जाने के बाद ही शुरू किया होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे हो, घर के लेवल पे हो, कॉर्पोरेट लेवल पे हो, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो. सो द प्रॉब्लम विद आवर वेस्ट इज अ लॉट हार्डर टू इग्नोर नाउ, एंड वी हैव everyday factors such as illegal dump sites and clogged drainage systems to remind us. डंप साइट की बात करती हूँ तो मुझे एक चीज याद आती है. याद क्या आती है, लाइक मैं बचपन में दिल्ली जाती थी, और अब जब मैं 25-30 साल बाद दिल्ली आई हूँ, तो व्हाट हर्ट्स टू सी इस, पहले शायद कचरे का एक ढेर हुआ करता था, और अब दिल्ली और उसके राउंड अबाउट्स में 5 से 6 कचरे के ढेर, जिसे हम वेस्ट माउंटेन्स कहते हैं, वो हो गए हैं. तो सुधीर जी, as a person who is related to the waste management activities, and you are an expert to it, आपको क्या लगता है कि क्या सिस्टम, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, कौन से लेवल पर, is there a solution to this कचरे का ढेर, and how is your experience or any experience which you would like to share from your experience, जहां आपने काम किया हो, जहां आप रहे हो, जो आप शेयर करना चाहें, जिससे कि शायद इस वेस्ट मैनेजमेंट या इस वेस्ट को रिडक्शन करने में हमें मदद मिल सकती है. Let me tell you a small example from my this thing. I have been living in Chandigarh, and in Chandigarh we have been given 2 dustbins by the municipal corporation. Now one is green and one is blue. So they asked us to store separately the wet and the dry waste, and it is to be handed over to the sweeper, whosoever is coming for the door-to-door collection. And this practice we were asked to follow, but initially people were not following, and they were giving the mixed thing. This thing initially they were not even using those dustbins which were provided to them free of cost. But then the messages started coming from the municipal corporation through their people used to visit our place, giving our awareness, and the time had come when they asked us to put it separately and hand it over to the sweeper who is doing door-to-door collection. In case we are not doing it, then that sweeper is authorized to click a photograph and send it to the authorities, and there used to be a challan at the site. So my only submission here is the enforcement to the system. The only solution, I mean, when we are educated, we should do it of our own. And in case we are not able to do it, then there is a penalty which will teach us that either you do it, or I mean, it is not acceptable if you are not doing it. Right. So if we are able to control it at a source, so it means we are separately giving a stream, different streams are going to the different channels. Then definitely these heaps of garbage are not going to be existing, because the channelization flow of garbage is going to be in the right channels, and those channels will be leading to the usage or recycling, or I mean the better solutions to the waste, and ultimately the whole effort would be not to get into the landfill. Right. So this is what I see. These are the solutions we are definitely heading towards. राइट एंड बिल्कुल सही कहा आपने. जो मेन वर्ड आपने मुद्दा यूज किया, एनफोर्समेंट ऑफ सिस्टम, बिल्कुल इसका होना शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एक चीज एक डिसिप्लिन वे में चलेगी. तो जब हमने बात की सिस्टम की, डिसिप्लिन की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, सुधीर जी अपने रियल लाइफ में भी काफी डिसिप्लिन्ड है. He keeps himself fit and he is very ethically strong, and he believes in the philosophy of more fruitful and less harmful to others. एंड इन्हीं एथिक्स के चलते चलते जब मैंने इनसे पहली बार बात की थी, तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था विच वाज जीरो फॉलो.
बिकॉज ही फील्स दैट फॉलो अप इज अ वेस्ट। तो हम जब वेस्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक मटेरियल कचरा नहीं है, ये आपकी सोच में, आपकी एक्टिविटीज में और आपकी पर्सनालिटी में भी एक वेस्ट का रिडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जीरो फॉलो अप और वेस्ट की आपकी जर्नी या आपके व्यू के बारे में। Ma'am, this is a very personal opinion which I follow in my life. That if I tell somebody that I'll be coming at 2 o'clock there, and I don't adhere to my own words 2 o'clock, it means I am insulting myself. You know, and self insult is the worst insult anybody can have. So I thought that follow up, whenever person does the follow up, it means he is not getting his expected things, and he is trying to remind the other one. So I thought that why I should be given a reminder for my things which I am supposed to deliver, or which I am supposed to give it to somebody. So I always follow that whenever I commit something to somebody, I should adhere to it at the right time, and at the right place, and in the right quantity, so that he need not to even tell us. So भरोसे का आदमी बनाना, फिर किसी को भरोसा होना चाहिए कि अगर सुधीर सिंह ने कोई बात कही है तो वो पूरी होगी, उसको किसी फॉलोअप की जरूरत नहीं है. और in the industry, in the organizations, if we start following up this principle, that I need to deliver something to somebody, like I'm in purchase, so I need to bring material well in time, and this is my duty to bring it. So why there should be a follow-up to me? So that way I'm trying that it's a non-value added activity, and it is a waste. It is a waste basically. So which has to be in our mind. Our mindset should be like this, that nobody should be giving me a reminder, nobody should give me a follow-up for the things which I am supposed to do. It's a very different type of concept, and I really enjoy it for myself. वंडरफुल वंडरफुल सुधीर जी, आपने मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात कही। मैं कहूंगी सिर्फ एक मटेरियल वेस्ट ही नहीं, एक पर्सनालिटी के अंदर, एक माइंडफुलनेस के अंदर भी इस चीज का आना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये कहा भी जाता है कि वन ऑफ द टायरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ कॉर्पोरेट लाइफ इज द फॉलो अप कल्चर। लाइफ वुड हैव बीन सो वंडरफुल इफ वी असाइन टास्क टू पीपल एंड दे कंप्लीट देम विद द ज़ील ऑफ मिशनरी विदाउट एनी सेकेंड रिमाइंडर। तो ये जो खुद की समझ या खुद की कॉन्शियसनेस होती है, इसका होना भी एक वेस्ट रिडक्शन में सर्टनली हेल्प करता है, क्योंकि आपको एक चीज को बार बार करने के लिए किसी को बताना नहीं पड़ रहा है, आपको फिर से पूछना नहीं पड़ रहा है। एंड दिस शोज इन योर पर्सनालिटी सर्टनली कि आप वेस्ट को सिर्फ एक मटेरियल, एक पेपर, एक चीज में ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी माइंड, आपकी सोल एंड आपके डेली हैबिट्स में भी लेकर आते हैं। दैट इज रियली वंडरफुल टू नो सुधीर जी। मतलब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि एज अ वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट आप एक बहुत ही अच्छी माइंडफुल चीज आज हमारे साथ शेयर की है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। एंड वैसे भी कहा जाता है कि मतलब जब हम मटेरियल चीजों की बातें करें कि द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट इज द वन यू डिडंट बाय। एंड द सिमिलर वे मैं कहना चाहूंगी, हम जब ये रिमाइंडर या फॉलो अप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड को भी सुकून दे रहे हैं, हम उसको एक्स्ट्रा डेटा नहीं दे रहे हैं, अननेसेसरी के फॉलो अप्स की वजह से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आई रियली विश कि अगर दुनिया में सब लोग इस चीज को फॉलो करने लगे तो हम बहुत टाइम बचा सकते हैं, सिर्फ चीजों को समझाने, पूछने, बार बार करने या बार बार उनको इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहने में। सो थैंक यू सुधीर जी, दिस वाज रियली वंडरफुल कि आपने सिर्फ अपनी वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिविजुअल लेवल की जर्नी ही नहीं, बल्कि माइंडफुल जर्नी को भी हमारे साथ शेयर किया। एंड आपने जैसे कहा कि ये सिर्फ पर्सनली नहीं, आई एम श्योर ये चीज सभी को फॉलो करनी चाहिए टू रिड्यूस वेस्ट, नॉट ओनली इन मटेरियल थिंग्स बट ऑल्सो इन द मेंटल थिंग्स। सो थैंक यू सुधीर जी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। The last thing which I want to submit here is, we keep analyzing ourselves, how green we are, how eco-friendly we are. So anything we intend to use, we must see whether it's user friendly or it's environment friendly. In case it is not environment friendly, we must look for an alternatives which are green in nature,
which can which are not affecting our planet adversely, and rather we should opt for those things in totality. So every time there has to be a check on our own self, how green I am, how green I am. So in that way, it's an individual matter, and it will be a thing of inspiration to others, and people will follow it. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड सुधीर जी, कि हमें पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है, पार्ट ऑफ पोल्यूशन नहीं। और इसके लिए हमें अपना हर स्टेप हमारी डेली एक्टिविटी में हम कितने ग्रीन हैं, हम अपनी हर चीज जो सुबह उठने से कर रहे हैं उसमें कितने थॉटफुल है, कितने माइंडफुल है, कितने इको फ्रेंडली एंड कॉन्शियस है, इसका हमें खुद को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट वॉज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच। आज के ग्रीन पॉडकास्ट में आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। सो लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। वेस्ट मैनेजमेंट के सारे आर्स को याद रखिए। रीथिंक योर चॉइसेस, रिफ्यूज सिंगल यूज थिंग्स, रिड्यूस योर कंजम्पशन, रीयूज एवरीथिंग, refurbish old stuff, repair before you replace, repurpose, be creative, reinvent and recycle the last option। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो rot, which is called composting। So guys, इन सारे आर्ट्स को फॉलो कीजिए, माइंडफुल रहिए। वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ चीजों में ही नहीं, अपने मेंटल स्टेट में भी लाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमने जीरो फॉलोअप की सुधीर जी ने बात की। और इसी तरह से ग्रीन, हेल्दी एंड एक वंडरफुल प्लैनेट की तरफ बढ़ने के लिए हमारी कोशिशों में साथ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तत्व गर्ल फिर से लौट कर आएगी इसी तरह की सस्टेनेबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सस्टेनेबल रहिए और अपने ग्रीन लिविंग को, ग्रीन स्टेप्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।